Hello everyone, welcome back to my new video, and today we are going to talk about new cue card describe someone who wear unusual clothes। और हम आज इस क्यू कार्ड पे बात करेंगे बिकॉज ये क्यू कार्ड नया अपडेट हुआ है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि क्या बोलें इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो और देखते हैं हम इसमें कौन कौन से आइडियाज हैं वो बोल सकते हैं। आई विल ऑल्सो गिव यू वोकैबुलरी फॉर द सेम। Now let's have a look at our question, and it says describe a person who wears unusual clothes, and you should say who he or she is and how do you know him or her, what kind of clothes he or she wears, and why do you consider that his or her clothing choices are weird। So basically यहाँ पर unusual का ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसने उल्टा सीधा पहन लिया, आप इसे इस वे में भी लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ओकेजन थी एंड दोज क्लोथ्स वर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट ओकेजन, तो आपको उस टाइम पे दोज क्लोथ्स लुक वियर्ड, तो उस पे भी आप बोल सकते हो। नॉट ओनली कि वो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनता है, ऑल्सो यू कैन से कि समवन हु चूजेस ब्राइट कलर्स वो भी वियर्ड है। अनयूजुअल का मीनिंग है जो यूजुअली लोग ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और आप हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में घूम रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल, तो आप वो भी बता सकते हो। गर्मियों में आप जैकेट पाके डाल के घूम रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट दैट कि वो उसने जैकेट डाली हुई थी, सो दैट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल। सो देर इज़ नथिंग हैव टू बी लाइक द काइंड ऑफ क्लोथ्स कोई भी हो सकते हैं, ओकेजन चेंज हो सकती है। राइट ओकेजन पे राइट क्लोथ्स नहीं पहने हो सकते, राइट वेदर में राइट क्लोथ्स नहीं पहने हो सकते। अब तो आप इस वे में भी इसे डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यू कार्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप अपना क्यू कार्ड है उसे प्रिपेयर करें, सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर स्टार्टिंग लाइन और द इंट्रोडक्शन। चाहे तो आप उसे जो आपको नोटबुक प्रोवाइडेड होती है वहाँ पे पेज, उस पर भी लिख सकते हो आप, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आप भूल जाते हो स्टार्टिंग में। सो दिस इज द यू कैन से द क्रूशियल टाइम जब आप शुरू करते हो क्यू कार्ड। दिस इज द टाइम जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। सो हमने वो नहीं होने देना। अगर आपको याद करने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत आती है, सो राइट डाउन द फर्स्ट लाइन, सिर्फ एक लाइन लिख लो, वो बोल दो, उसके बाद यू विल गेट हैबिचुअल, आप बोलना शुरू कर दोगे। सो इन इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू 3 इंट्रोडक्शंस, आपको जो भी सही लगे यू कैन गो विद दैट। और हर क्वेश्चन का मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा और आपको जो भी सही लगे आप वैसे ही बोल सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि यही बोलना है, अगर आप यही बोलना चाहते हो सो दैट इज फाइन, बट आई सजेस्ट कि यहाँ से आप आइडियाज लो एंड क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ माई आइडियाज, और वो आपके लिए फिर ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर आप मेरी बातें सुन के अपना खुद का वर्जन बनाओगे। एंड यू कैन ऑल्सो पुट सम वोकैबुलरी अपनी तरफ से उसमें। In the introduction, we can say that clothing is an integral part of our personality. Most people do not experiment with their dress up, they go with the latest vogue. However, certain people have this uncanny knack of wearing unusual clothes. So, ये हमारा जो बेसिकली इंट्रोडक्शन है फर्स्ट टाइप का, यू कैन गो विद दिस इंट्रोडक्शन। सेकेंड, okay, I have friends of mine who most of the time wear an impeccable dress. However, I know one person who often put on strange clothing, and he was one of my classmates in my graduation. His name is any name. His name is Rahul. And third introduction you can give is I personally like to dress very conservatively and normally and avoid bright colors. If I think about unusual clothes, yeah, unusual choices, there is one person that I can think of. So this is the third type of introduction. आप इन तीनों में से कोई भी इंट्रोडक्शन चूज कर सकते हो and you can put it in your cue card. Now, after doing the introduction, what we have to do, we have to answer the cues one by one. जो भी हमारे पास cues हैं हम उसे one by one आंसर करेंगे and we'll take it to the end. So first of all, first cue is who he or she is and how do you know him or her. So answering this question, I would like to say that my friend Tina always try to wear unorthodox clothing. We met at a fashion show last year. She is 21 years old and her dream is to become a supermodel. So basically what I did, I have told about
जो भी मेरा दोस्त है या जिसकी भी मैं बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में एक बैकग्राउंड दे दिया हमने कि देयर वी मेट एंड उसका नाम ये है और वो ये करती है या इस टाइप की है बेसिकली। एंड सेकेंड टाइप आप इसे और कैसे आंसर कर सकते हो सेकेंड वे में इज दैट एज आई सेड ही वॉज माई क्लासमेट ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग आई नो हिम सिंस we met in the library to get the reference books. Actually, he and I were searching for the same book, Fundamental of Mechanics, and turned out that there was only one book. He offered me to take it, and from his dressing style, I thought he may be a student of fashion designing. After our discussion, only I come to know that we will be joining the same course. So यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट जस्ट टू पुट सम आइडियाज और स्टोरी को एलेबोरेट करने के लिए आई हैव टोल्ड कि जो भी मेरा फ्रेंड था वो मुझे यहाँ पर मिला एंड दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट मीटिंग वाज लाइक और ये उसमें हुआ। एंड थर्ड टाइप का जो आप दे सकते हो वेरी सिंपल लाइक ही इज माई क्लोज फ्रेंड एंड हिज नेम इज कोई भी नेम राहुल फॉर एग्जाम्पल ही इज माई क्लोज फ्रेंड एंड I have known him since my childhood and we live in the same locality and whatever। आप इसे तीसरे तरीके से ऐसे आंसर कर सकते हो। सो वी हैव डन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्यू था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्यू and it says that what kind of clothes he or she wear and why do you consider that his or her clothing choices are weird, and please look at the vocabulary which I'm using and make note of that. So starting, she is a maverick person who doesn't like others' advice. She reflects this attitude of hers in her clothing. Every time she comes with a different style of carrying clothes. Due to this attitude, she has carved a niche for herself in the fashion arena. Niche means a comfortable position in the employee's life. Last month, she won a beauty pageant because of this quality of hers, which means a competition basically where you have to show up your dresses. Pageant means the show was about the fusion in fashion where the participants needed to do experimentation with their dressing. What she did was she wore the trouser of her dad and shirt of her sister. When she told me that she would dress in the way for the event, I was perplexed, which means I was baffled, I was confused, and everything. I advise her not to do such kind of experiment in front of big crowd, but as usual, she did not pay any heed to my words and carried on. To my surprise, when I saw her on the ramp, she was looking gorgeous. She won the first prize. She won the first prize, and that award led to the paradigm shift in the confidence and the performance. Paradigm means exemplary. Although she is a beauty model, although she is a budding model, her distinct style has moved her career towards an impressive growth trajectory. Budding here means जो नया नया जो अभी उग रहा है, that is budding, and it's moved her career towards an impressive growth trajectory. Trajectory is the path that something follows, and growth trajectory means वो ऊपर की तरफ वो जा रही थी. So this is the one way to answer these questions, and now let's look at the second way of doing this same question. In this, we can say that he used to wear jean pants below the waist, which makes him very different from the others. He had a lot of accessories on his clothes, like he's selling those items, especially the bell-shaped objects hanging on his t-shirt was so funny. I couldn't stop laughing at the time when I saw it. His shoes were normal, but he had made bizarre designs on it. Actually, this kind of dressing mostly fashion designer students prefer to wear, but for others, this kind of dressing is really peculiar and funny. So that's why I think he looked weird on that dress. So this is the second way to answer this question, and the third, we'll look at the third way to answer these questions. I find his clothing preference unusual because he doesn't follow the usual clothing. For example, once I saw him wearing sandals with formals, to be precise, a men's three-piece suit and sandals.
Then another time I saw him wearing a jacket in the summers. He doesn't believe in social norms. He just wears whatever he feels like wearing. I have seen him wearing girlish shades like pink and purple. Actually, he wants to be a fashion designer when he grows up. So, this is another way to answer these questions. So he likes to experiment with his clothes. I have seen him taking his mother's and father's clothes and make a complete dress out of them for himself. He does that with his own clothes too. For example, recently he made denim shorts by cutting his jeans. I believe I've heard people talking about his odd fashion choices, but he is proud of his clothing choices. The fact that he has a very good physique and he's able to carry everything he wears so well. Every time I see his clothes I feel like I wouldn't wear them, but I also somehow felt he is looking good in them. So this is the third way to answer these questions. सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू द थ्री वेज, हमने तीन स्टोरीज यहाँ पर कवर की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक फ्रेंड वाली थी, एंड सेकंड जो हमने एक नॉर्मली स्टोरी, सेकंड थी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली थी, एंड थर्ड हमने एक नॉर्मली स्टोरी कवर की. नाउ यू हैव लॉट ऑफ वोकेबलरी, यू हैव थ्री स्टोरीज एंड यू कैन प्रिपेयर योर ओन आइडियाज ऑल्सो. अभी आपको इसके बारे में पता चल चुका है कि क्या इसमें हम बोल सकते हैं. सो प्रिपेयर दिस क्यू कार्ड एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. And I hope that this video will definitely going to help you and you will all get good marks. Thank you.